So now we will move forward to our next session and a very important session, how to network in the United States. And I would also like to introduce the panel of this session. The first of all, I would like to introduce Dr. Ridal Jannat. Dr. Ridal Jannat is from the pioneer batch of Amiruddin Medical College. She did her residency in internal medicine and she is currently working as postgraduate resident 4 in rheumatology fellow at Wake Forest University, North Carolina. And she is joining us, and it's around 4 a.m. there, and she's awake just to talk to you guys. And we are very grateful that she's joining us now. The next member is joining is Dr. Afshin Nasser. She already talked to you, and she's a postdoctoral research fellow and a co-investigator for women health research at Yale University, Connecticut, United States. And she's also in a similar time zone. And we are also very grateful that she's joining us and staying up till late tonight. And the third is myself, Dr. Mohammad Ahmed Fraz. And with that, we will begin that session. Thank you. Hi everyone, Assalamu alaikum. Can you all see me and hear me okay? Walaikum salam, yes ma'am. Okay. Hi, Sayed. तो हमारा सेशन जो है वो नेटवर्किंग इन द यूएस है एंड विल ट्राई टू कीप इट लाइक विद इन 30 मिनट्स सो इट्स नॉट एज पेनफुल बट एक तो मुझे ये कहना था कि आई मीन इंट्रोडक्शन तो हमारा ऑलरेडी करा दिया है. मैं अभी करंटली ट्रेनिंग में हूँ. मेरा एक और साल रहता है और इंशाल्लाह आई ग्रेजुएट जून ऑफ 2026. और अभी मैं आजकल में मैं जॉब्स ढूंढ रही हूँ. तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस जो रेजिडेंसी से पहले एज अ मेडिकल स्टूडेंट था टू लुक फॉर अ रेजिडेंसी एंड देन फॉर अ फेलोशिप एंड नाउ लुकिंग फॉर अ जॉब एज एन अटेंडिंग. मैं बस एक बात कहूँगी, वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो विच इज ऑलरेडी अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, राइट, एंड यू आर गोइंग टू अ मेडिकल स्कूल जिनका इनको यहाँ पे पता भी नहीं है कि वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या हो रहा है. एंड आई डोंट नो if this is a safe space to even mention this, but recently जो नेपाल में I think एक event हुआ था कि something to do with कि step 1 के scores ठीक नहीं आ रहे थे लोगों के, you know, कुछ shady business हो जाता है. तो उसमें से अगर आप आ रहे हो तो they do get worried कि कैसे हम असेस करें, क्योंकि स्कोर्स का भी अब रिलायबल नहीं है और वैसे भी अब सारे एग्जाम्स पास फेल हो रहे हैं. काफी सारे बैक इन माय डे आई हैड टू टेक अनदर एग्जाम दैट वाज कॉल्ड स्टेप 2 सीएस, जो अब ड्रॉप हो गया है. स्टेप 1 अब बिल्कुल भी स्कोर्स नहीं रहे, इट्स पास फेल, राइट. सो व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट, राइट? श्योर रिसर्च मैटर्स, स्कोर्स आपके होते हैं, बट आई विल से दिस बेस्ड ऑन माय डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग सो फार कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नेटवर्किंग, बिकॉज उससे उनको तसल्ली हो जाता है कि ये कहाँ से आ रहे हैं, इनका स्कूल कैसा था, विल दे बी एबल टू get over the cultural shock here, right? So the one thing these people are actually looking for, and I can confidently tell you that, and I think my colleagues here will agree with me on that, is that networking. वो देखते हैं कि क्या ये हमारे अंदर जेल इन हो जाएगा. If somebody is out there who can put in a word for you, is also in IMG, things like that, you know. So you want to make sure कि आप अपने आप को प्रेजेंट किस तरह से कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन आपके स्कोर्स कैसे हैं, आपका गैप ईयर कितना था सिंस ग्रेजुएशन, आपकी रिसर्च कितनी है, दैट इज ऑल सेकेंडरी. So what we're going to try to do here today is give you some practical tips that we learned along the way. So I think I will let Afshin or Tara take over. Thank you, Rida. I think you touched on some of the most important things when it comes to, being an IMG and being in this system. I definitely think Tara, he can give everybody sort of like a view of how it is once you're on the other side of the door and you're sort of like still getting into the system. And I think Rida and I are like well positioned to talk more about once you're in the system, you're on the other side of the door. How does networking work? What are your resources, and what is sort of like the mindset to go in? And so I'm curious if Tara wants to go in first and talk about, emails and LinkedIn, or should I just dive directly? Yes, sure, Dr. Afshin. I will take from here. Sure, Okay, Dr. good. Awesome. Okay, so thank you so much once again, everyone. Again, क्योंकि नेटवर्किंग की बात हो रही है तो मैं इसको थोड़ा सा उर्दू में लेकर आऊँगा ताकि हम अपनी ज़ुबान में बात कर सकें और बेसिक चीज़ें बता सकें कि हम इतना तो समझ गए कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है. लेकिन अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या की स्टेप्स हो सकते हैं, किस तरह आप अपनी यूएस में नेटवर्किंग को बेहतर कर सकते हैं.
मैंने आपको अपनी थोड़ी सी जर्नी बताई थी कि किस तरह मेरे वीजा रिफ्यूज हुए, मैं साथ रेजिडेंसी ट्रेनिंग कर रहा था, फिर जब मैं घर पहुंचा तो मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट था। आई रीच देयर इन अगस्त, तो सिर्फ अगस्त का महीना था जिसमें मैंने कुछ परफॉर्म करना था, क्योंकि सितंबर में मैच एप्लीकेशन अप्लाई करनी थी, अराउंड लाइक सारा कुछ था। So I will be talking about putting a step into the and then she will talk about maintaining it. First, be professional. This is the most important thing. Can you please move the next slide? Okay. So, whenever contacting any of the senior in international level, use their last name. This is really simple, but most of us we don't know. Second, briefly introduce yourself. Nobody wants to read the long emails. This was the opening line of my all the email. I am a medical graduate from Pakistan. Nobody know that you are from KE, from Amiruddin Medical College or any other medical college. They just want to know your bigger introduction. I have successfully completed my USMLE step 1, or maybe both of my step, or maybe I am ECFMG certified, or maybe I am just a medical graduate. This should end here. Directly state your purpose. I am reaching out for an observership opportunity under your mentorship. Directly reach out. Tell them, maybe you can add just a one phrase to build a connection, that my alumni is working in your department. I read about department, it's international medical graduate friendly. There is someone in my family that is living in that area. I am visiting there in this dates. So I am reaching out for this observership opportunity. And always be very polite. But the most important, proofread, but more important than that, I did not receive most of my observerships on my first email. And then I talked to one of my seniors that I am not hearing back from my emails. And then they told me this very important golden rule. उन्होंने मुझे बताया, आपने ईमेल भेजनी है, 7 days के बाद उनको फर्स्ट फॉलो अप भेजना, एग्जैक्ट उसी थ्रेड में रिप्लाई करना है और एक सिंपल मैसेज लिखना है, दिस इज अ जेंटल रिमाइंडर टू माय above request. They will do consume. I receive all of my observation on my second rule. If you still don't receive reply on your second response, you can send a third reminder 2 weeks after the previous reminder. So make this very basic habit. Whenever you are emailing anyone, it should be very concise, it should be very to the point, it should be goal oriented, and it should be followed up with a reminder that shows your interest into their program. They are receiving hundreds of emails daily. I work with those attendings. The computers are usually open because I was rotating with them in pathology. उनके कंप्यूटर की स्क्रीन खुली होती थी, केस डिस्कस कर रहे थे और साथ ही मेल आ रही थी रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट और ऑब्जर्वेशन। उनके पास नहीं टाइम होता, खासतौर पर जिन फैकल्टी के ईमेल्स वेबसाइट्स पर गिवन होते हैं। मेरे सामने 1 घंटे में 5 से 6 रिक्वेस्ट आ रही होती थी और ईमेल को साइन ऑफ कर रहे थे, तो उनको नहीं देख पाते थे। So sending reminder is a very key step into approaching any senior. Next slide. Key element in a strong LinkedIn. The second thing that I gained is from the LinkedIn. LinkedIn is just like a network of the professionals. Just like you have your followings on Instagram, on Facebook. In LinkedIn, in search bar, you will just write internal medicine, put a filter of New York. All the people working in internal medicine who made the public profile will appear there. Very direct, and you will have access to them. Send them a very professional invitation. Okay, LinkedIn allow you 200 character note to send an invitation. और LinkedIn पे लोगों को बहुत ज्यादा मैसेजेस नहीं आ रहे, तो उनको ईमेल आ रही होती हैं, उनको सोशल मीडिया रिक्वेस्ट आ रही होती है, LinkedIn पर कोई चीजें नहीं आ रही होती. They do respond to that. I used to send them a message. I am an aspiring pathologist. Would you like to take some time to guide me? And just like that, just an open interest. And they do take up some time. They plan your activity with them. And the third thing that I want to talk about is probably seeking mentorship. The third thing, when you are rotating in an observership program, I remember I went to Case Western Reserve University for the month of August. Case Western was not famous for not giving letter of recommendation to its rotation. It's because of the nature of their rotation. They make you rotate with one attending only for 4 days. And I had to apply for the math cycle. I did not have a single letter of recommendation, but I tried to show interest to them.
I go early in the morning, used to preview the cases with the residents, ask questions. घर से टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ के जाता था, जनरल यूरिनरी में रोटेशन था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके पढ़ के जाने, उनसे क्वेश्चन पूछने, वंस साइन आउट हो जाने 12 1 बजे 2 बजे के बाद आई यूज्ड टू स्टे देयर. मैंने कहता था कि डू यू हैव एनी मोर केस फॉर मी दैट आई कैन रिव्यू. दे हैव डेजिग्नेटेड रिव्यूज एंड सेशंस अपस्टेयर्स. उधर चला जाता था, उधर बैठ के देखता रहता था. Luckily, user Indian, he was fellow there. I used to ask him, "What you see in those slides?" And then I used to tell them, "Okay, I saw this and I saw this." You also need to do something with that. Sometimes you need to compare with your books. You need to show your interest. 4 बजे रेजिडेंट चले जाते हैं, 4:30 बजे फेलोज चले जाते हैं, लेकिन अटेंडिंग जब तक उनका काम खत्म नहीं होता, पाकिस्तान के तरह का सिस्टम नहीं कि प्रोफेसर चले जाएंगे, सीनियर कंसल्टेंट चले जाएंगे. They stay back even after 5 p.m. And if you stay there, you show them interest, they see that. And then once you build a short relation with them, request them, tell them your story, from where you've gone, how you get there, because they don't know you. Stories connect you. Try to be a good storyteller. How you came here, what are your goals, how much you are motivated, and you need a letter of recommendation. I got 2 letters of recommendation from the Case Western Reserve University. That is, don't usually give 1 letter of recommendation for the entire maths. And that entirely helped me during my math cycle. And I received 14 interviews after that. And when I applied, I just had 2 US-based letters of recommendation. The other 2 letters of recommendation was from Pakistan. So this is the key difference here. The third thing, while in the US, I believe Afshin will talk more about it. I will just mention 2 things in that. I was lucky enough that I was involved in the research when I was in Pakistan. Forensic medicine में मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, बहुत ज्यादा डाटा था और पाकिस्तान में फोरेंसिक्स को रिप्रेजेंट भी नहीं था किया जा रहा. मैंने एक्सुमेशन में डाटा निकाल लिया, ऑटोप्सी में डाटा निकाल लिया और मैंने सब कॉन्फ्रेंसेस को भेज दी. ASCP को भेज दिया, USCP को भेज दिया, कॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स को भेज दिया, NMA को भेज दिया, NAME को भेज दिया. And my all abstract were accepted. Luckily, I went on those conferences. One of them was podium presentation, just like that. And I was the most junior presenter there. Some consultants थे, attendees थे. और जब मैंने presentation की, they actually liked that presentation very much. But I was very confused. Should I ask for help or not? But then I put a slide as of my last slide in my presentation. Okay, so me, Dr. Ahmed Swaz, I traveled from Pakistan all the way here to present this slide, and I am applying for this batch, and I will support the fund. And believe me, University of Rochester की chair उधर बैठी थी. She approached me, she gave her card, and she said, "Please do apply to my group." University of Vermont की program chair वहाँ पर बैठी थी. She said, "Do apply to my program," and I did this, receive the interview from the University of Vermont. So this is how. Whenever you think, okay, नहीं मुझे ये तो मेरा relevant नहीं है, ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन करनी चाहिए. जिस मकसद के लिए वहाँ पर गए हैं, मैं वो उन्हें बताना चाहिए. सेकंड कॉन्फ्रेंस में नेम अटेंड कर रहा था, नेशनल एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एग्जामिनर. वहाँ पर फेलोशिप के प्रोग्राम डायरेक्टर आए हुए थे. आई यूज्ड टू विजिट. थैंक यू सो मच मौलाना साहब ने इनके साथ बहुत ज्यादा अरेंज करवाता था साइंटिफिक सिंपोजियम और सेमिनार. हमें सारा उस प्रोसेस का पता था. तो मैं सब स्टॉल्स पे जाता था और उनको अपना इंट्रोडक्शन करवाता था कि दिस इज मी, आई एम एनी CFMG certified, I am applying for maths this year, and I will appreciate any guidance on that. I went for Cleveland Clinic chief resident who was part of the selection committee last year. I discussed my personal statement with him directly. He improved that, and I did receive the interview from Cleveland Clinic too. And you guys all know Cleveland Clinic is one of the leaders in the healthcare system in the United States. So all those things are best possible if you go, reach out, ask them. They will surely help you. And from that, I will pass the mic to Dr. Sheen Nasir. Thank you, please. I just need one second. All right. So I think that was great. I think one thing that you have to know is things are different once you're, back home trying to build connections here in the US versus once you are in the US and then you're trying to like build those connections, stay in those connections and sort of like expand those similar connections. So I think सबसे पहले तो ज़रूरी बात ये समझने की है कि why do you need connections? And here's something that I will tell you कि like I have definitely met people through my experience as a postdoc, जिन्होंने before they even took their USMLEs, they knew which
institute which surgical program they are matching into. And that's not because no, you don't actually know, but like you have that person who's there, who's your sponsor, who's gonna take it on his self-esteem to make sure that you match there. And so that's just I'm talking about like the best case scenario. Like you have that one person in that one program in the system who's there to sort of like vouch for you. On the other end of the spectrum, I'm not saying that that's always the thing that happens. Sometimes I think the other far extreme of the spectrum is that you are so disillusioned by the academia and the politics and the way healthcare system works in the US that I have definitely met people in my journey who came here wanting to be surgeons and decided to not have to do anything with medicine at all and ended up going into industry and doing other things. So essentially, I personally think that somewhere most people lie somewhere between the two extremes where they know where they're matching versus they're completely disillusioned. And in between the spectrum is that you have mentors and you have mentors for different roles. So essentially जो आपके mentor होंगे वो एक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे और उनके बहुत डिफरेंट पर्पसेस होंगे आपकी करियर ग्रोथ में. फॉर एग्जांपल एक रेजिडेंट अगर आपका कोई मेंटोर आपको कर रहा है तो वो आपको प्रोग्राम कंफर्म नहीं कर सकता कि ठीक है विल मेक श्योर कि आपके मैच इस प्रोग्राम में हो, पर वो जो चीज़ आपको कंफर्म कर सकता है वो ये कि वो आपको गाइड कर सकता है, इमोशनल स्किल्स सिखा सकता है, प्रोग्राम का कल्चर के बारे में बता सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है. फिर इसी तरह कुछ आपके मेंटर्स होंगे जो आपको ट्रैवल अवार्ड्स के लिए लेटर्स लिख के देंगे, कुछ होंगे आपकी रेजिडेंसी एप्लीकेशन के लिए लेटर लिख के देंगे, कुछ होंगे जो आपका नाम लीडरशिप पोजीशंस के लिए नॉमिनेट करेंगे, कुछ आपके मेंटर्स होंगे जो फ़ोन पिकअप करेंगे और कॉल करते जाएंगे प्रोग्राम डायरेक्टर को कि इस बच्चे को लो, इस बच्चे को लो, इस बच्चे को लो. सो देयर इज लाइक you have a lot of mentors, and B, every mentor has a different purpose to serve, and that's something that's important to keep in mind. Give me 1 second. All right, I'm still audible, right? Because my computer is showing some funny Yes. things. Okay, great. Awesome. So first off, you have to know that have a very diverse portfolio of mentors. दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि जो बहुत अच्छी बात रिदा ने की कि when you come from outside, they are kind of like skeptical of, how you grew up, where you grew up in terms of academics, not as a person, of course. And so I also sort of like touched upon it in the previous session that, a lot of specialties, especially the conservative specialties, are conservative because they conserve their traditions. And the traditions mean that Ivy League is only going to have Ivy Leaguers in their program. And so you have to break into that system being from outside. And so that's why it's very, very important to embed in the community. Now, it's very easy to say, how do you embed in the community? And I'm going to give some practical resources that people can utilize to, embed in the community. But before that, like taking a step behind, I want to say, in your academic presence, your two things. You always have to think about two things. One is your CV. क्या आप कर रहे हैं, क्या चीज़ आप अपनी CV पे लिख रहे हैं. And the second thing is you as a person. And that requires like a lot of soul searching. What is my armory of strengths? Who am I? What is my strength? Why am I here? What am I going to talk to people? And it also builds your, emotional intelligence. Because once you know who you are, and then the second thing, the space that you're in. For example, if you're networking in psychiatry, it's going to be exceptionally different from networking in cardiac surgery or in pathology. So you have to understand A, the climate that you're into, B, who you are and what you want out of this conversation. And so when you're meeting people, so the previous session that I talked about postdoc was about building your CV. But this session is essentially being a person. That's it. Like, do not think कि आपने किसी से मिलना है और आपने उसे बताना है कि मैं तो दुनिया बदलने आ गया हूँ और मैंने ये करना है. No. Stay very simple. Stay very genuine. Talk about the weather. Talk about their culture. Talk about, things that connect people. And just show that, you can just perfectly act normal. You're not overwhelmed. You're not nervous. And those things, the imposter syndrome or the stereotype threat, and those things are very, very common. So that's why you have to do like first your own soul searching, who you are and what you want. And then I would say, so that's more on the side of having soft skills
to network with people, knowing yourself, knowing where you are, who you are with, and what you have to talk about. The other thing I wanted to mention is, resources. So yeah, I'm talking a lot about resources, but what are those resources? And I personally think I wholeheartedly believe in value aligned work. I feel like you should think कि क्या ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं सुबह 4 बजे भी रोज़ उठूंगी, जिसकी वजह से मैं रात को भी 12 बजे तक भी जागूंगी, like what motivates me. And जब आपको वो चीज़ मिल जाए, then find the people who are in that space. So if you're in research, for example, my niche is women's health, so I will connect with women who are in women's health. I would want to learn what they're doing, but I would also create value for them to be able to continue their relationship with me. So I think I would double underline the word create value. So one is obviously the job that you get, the position that you get, and it goes for residents, it goes for researchers, it goes for essentially MPH students, PhD students, and it's the same for everyone. I think the other thing is associations. I very fully endorse that if you want to look like you're embedded in your community, you have to create value for that community. So giving like a very general example, Tarar is one of the great leaders. I feel like he's the leader of the future, and he's done great work. But right now, what he's doing by pooling us all together for this is that he's giving back to the Amiruddin community. That look, Amiruddin gave me so much, and now I'm giving it back to you. And so what I sort of like learned through my experience is that, Yale Postdoc Association has 1,500 postdocs under it. And so we have a bunch of different problems. 68% of us are on visas, our vulnerabilities are different. And so we need a lot of advocacy to sort of like have our pay raises or, work on mentor-mentee relationships, find the right PIs who are not toxic, maintaining a registry for PIs who do not promote your careers. So I was really enthusiastic about advocacy, and I worked my way through it. And now I'm elected to be the chair of advocacy for Yale Postdoc Association. So I worked. That work gave me the ability to longitudinally have the connection with the people, because we are not just meeting to talk about chai, we're meeting to talk about work, and then we're longitudinally meeting again and again. And then this is also one of those experiences that I can talk about in other spaces. Let's say I'm in a conference, or I am invited to a talk, I'm in a different department, there's somebody coming from talk, I can talk about, oh yeah, I do this, I do that, it's a portfolio of things. And similar to that, for example, my interest is surgery, so I joined Association of Women Surgeons because I particularly think women have like a different set of things that they have to navigate in academic space. And then within surgery, my interest is cardiothoracic. So then I joined Women in Cardiothoracic Surgery Association, and now I have leadership positions in both of those. So what happens is, find the association for your specialty. B, start working. Like, do not wait to be a committee member. Start working with people. And this is volunteer work, so there's no hierarchy. Like right now, the positions that other people hold in women in thoracic surgery next to me are professors of cardiac surgery, they're professors of thoracic surgery. It does not matter whether you're a resident, you're a postdoc, you're an MPH, if you're working, you get the position, and that's the beauty of associations. So I think that you have to find value aligned work, and you have to find in your core who you are. B, you have to build relationships through work so that you have an opportunity to meet people like bi-weekly, once a month you're meeting the same people, so then they know your work ethic and they know who you are as a person. And then 3 is that maintaining those relationships. Let's say आपका काम खत्म हो गया, आपका project पूरा हो गया, आपका project publish हो गया, आप next अपना project publish करो तो अपने पिछले professor को जरूर email करो कि देखें, I published this, very happy to inform you that I did this. Every time something new happens in your life, the people that you've supported you in the previous year, reach out to them, make sure they know that you're doing this. They also feel that gratitude that they have invested in your career, and now that investment is going somewhere. Teachers have this pride for their students, which is, a very beautiful relationship in teaching. So absolutely keep them in the loop, maintain those relationships. And yeah, so work on your soft skills, know what you're doing,
act very normal when you meet people. Your CV will say your achievements, but you as a person, when they're, for example, let's say the position opens up and they interview like 50 people for a position, they know on the CV कि लोगों ने कितना काम किया है, कितनी मेहनत की है, क्या उनकी achievement है. The reason they're interviewing you is because they want to get to know you. So then show them who you are. Like first you have to know who you are and then you show them who you are. So I think those are all my like discussion on the soft skills and then some resources. And I truly think that conferences are a great point to start a relationship, but it's hard to like build like a आप किसी से एक दफा मिलो और कहो कि मुझ में अप्लाई करूँ रेजिडेंसी में हेल्प करें, very unlikely to work out, at least in the surgical spaces. But then you keep up via emails, then you keep up via your research work, you keep up via your association work, and then you keep informing the people that you've previously worked in. So you kind of like have a diverse portfolio of how many people know you via which work. And the other thing I quickly want to touch on is, okay, we're again short on time. So the other thing that I want to quickly touch on is that sometimes you work really hard and there are those mentors who are, you're basically building their research and they do not mean very well for you. They don't want to invest in your career, or they're predatory in nature, they're toxic. Unfortunately, that's the reality for a lot of PIs in highly academic environments, such as surgical surgery at Yale is an extremely competitive environment. So that's another reason you should never put all your eggs in one bucket. कि मैं एक शख्स को जानता हूँ और उन्होंने मेरी दुनिया बना दी. Never gonna happen. Have like 10 mentors for different purposes. And that's sort of like my way to go around networking. I think if Rida wants to add something. Yes, I promise I just have a few things to add. Again, ये सब वो चीज़ें मैं बताना चाह रही हूँ जो मैंने खुद खराब की थी, इसलिए मैंने कुछ सीखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टू ऑल द मेडिकल स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगी वो ये है कि देखो, मैं यहाँ पे अगर हूँ या अफशीन यहाँ पे, या अगर यहाँ पे अहमद फराज अगर यहाँ पे आ रहा है, तो हम लोगों ने भी इसी ही प्रोसेस से गुजरे हैं. ठीक है, यही खवारियाँ की हैं, यही लाइक यू हैव टू गो थ्रू द होल प्रोसेस. ठीक है, तो जब आप रीच आउट करते हो, जब आप व्हेन यू आर एट लॉस और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत इंटिमिडेटिंग प्रोसेस है, तो यू नीड वन पर्सन, राइट, टू स्टार्ट. यू नीड वन मेंटोर. सबसे इजी मेंटोर कौन होता है? योर अलुमनाई, राइट? रीच आउट टू अस, वी बी लाइक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वॉक मी थ्रू द प्रोसेस. और मैंने इतनी नंबर ऑफ फोन कॉल्स किए हैं पाकिस्तान में. अब तो लिटरली मैंने उसकी एक नोट्स में वो बनाया हुआ फाइल कि मैंने क्या बोलना है, मतलब अच्छा क्या होते हैं स्टेप्स, कैसे आने, लाइक क्योंकि हर एक को एक क्विक ब्लड चाहिए होता है. लेकिन मेरी बात सुने, देखिए हम लोग भी एक बिजी लोग हैं यहाँ पे. ठीक है, हम लोग भी उसी प्रोसेस से गुजरे हैं. और अगर हम आपको समझाना चाहते हैं एक बात, वो ये है कि ह्यूमिलिटी. ठीक है, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए. पाकिस्तान का वर्क कल्चर यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से है कि आपको, यू डोंट हैव टू पुट योर सेल्फ आउट देयर, राइट? यू डोंट हैव टू अपने आप को ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं होती. आपकी सीवी विल डू दैट टॉकिंग फॉर यू, लाइक अफशीन सेड, राइट? सो आपकी सीवी सबने देख ली है, वो आपको पता है कि आपके क्या अचीवमेंट्स हैं. ठीक है, और ऑनेस्टली मैं तो भी ये कहूँगी कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया. जो IMG जितनी खवारी करके आते हैं, बहुत मल्टीपल चीजें लोग करते हैं, तो सब लोग इस मेहनत से गुजरे होते हैं. तो आपने अपने आप को जब बातें करना है, तो जितना आप ह्यूमिलिटी के साथ अपने आप को प्रेजेंट करोगे, जितना आप तमीज रिस्पेक्ट से बात करोगे, उतना ज्यादा लोग आपसे ज्यादा इंप्रेस होंगे, बजाय कि यू आर जस्ट पुटिंग इट आउट देयर कि मैंने तो पता नहीं कितने स्टेप्स कोर्स. नोबडी रियली केयर्स अबाउट दैट. ठीक है, दूसरी बात ये है कि जब आप ईमेल्स करते हो, जो अहमद फराज ने बात की, मुझे एक बात ऐड करनी है कि देखो, वो उनको हजार लोग आते हैं इधर, सब लोग ईमेल्स करते हैं. व्हाट मेक्स योर ईमेल स्टैंड आउट इज जो तुम 3-4 वर्ड लिखोगे सब्जेक्ट लाइन में. ठीक है, तो सब्जेक्ट में लिखो कि व्हाई यू आर रीचिंग आउट. ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर एन ऑब्जर्वरशिप, क्लर्कशिप, ठीक है, अनपेड, व्हाटएवर, नॉन हैंड्स ऑन, मतलब कुछ ना कुछ अपनी, यू आर सेलिंग योरसेल्फ इन दैट सब्जेक्ट लाइन. सो मेक श्योर यू पुट इट आउट देयर रियली कंसाइजली, एंड मतलब दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी बात ये कि प्रूफ रीड करो. देखो, आई नो दिस इज सिली,
मैं भी घुसी हूँ। मेरी फर्स्ट लैंग्वेज ना इंग्लिश है, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, मेरी दूसरी लैंग्वेज पंजाबी है, मेरी थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है। हम कोई भी पैदा होते से नहीं बोल रहे होते, लेकिन देखो जब आप एक कल्चर में आ रहे हो तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट, ठीक है। अगर कोई गोरा पाकिस्तान आता है और वो कोई उर्दू का लफ्ज नहीं सीखता तो इट सीम्स वेरी प्राउड, राइट। सो इफ यू आर कमिंग हियर, you have to understand कि you have to understand the language, you don't have to adopt the accent, but you have to be mindful, right। तो अगर आप कोई ईमेल लिख रहे हो और उसमें आपको कोई सेंस ही नहीं है, वर्ड्स ऊपर नीचे हैं, सारे अब AI टूल्स आए हुए हैं, मेक श्योर यू प्रूफ रीड योर ईमेल। उससे ये लोग बहुत पुट ऑफ होते हैं, और मुझसे मेरे अटेंडिंग से काफी सारे IMGs की ईमेल्स मेरे दिखाई हुई है कि देखो ये लोग ये लिख रहे हैं, तो आई नो कि दे कंसिडर दैट। सो मेक श्योर यू प्रूफ रीड योर ईमेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी बात, अगेन अहमद फराज, आई एग्री विद यू, you need to follow up on emails, but please do not harass people, ठीक है। मैं इतने कैंडिडेट्स को जानती हूँ जिनके इतने हाई स्कोर्स है और उनकी रिसर्च प्रोफाइल इज लाइक क्रेजी, ठीक है। बट लेट मी टेल यू, जब आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी वियर्ड लगती है ना, इफ यू आर हरासिंग देम, यू आर ईमेलिंग पीपल बार बार, अगेन पाकिस्तान वाला कल्चर नहीं है, यू डोंट हैव टू पुट योरसेल्फ ऑल ओवर पीपल्स फेसेस, ठीक है। सेंड एन ईमेल, फॉलो अप पोलाइटली, दैट्स एंड ऑफ स्टोरी, ठीक है। हरास नहीं करना, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद देखो, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड, दैट इज माई मंत्र एटलीस्ट, ठीक है। एफिशिएंसी इज ऑल यू नीड, ठीक है। तो अब मैं अपनी गलती बताती हूँ। मुझे था मेरा भाई GI करा था, आई हैव टू डू GI, और आई डिड सो मच रिसर्च इन GI। मैंने सारी उसकी जो US में बड़ी कॉन्फ्रेंसेज हैं स्टार्टिंग फ्रॉम माई इंटर्न ईयर अटेंड की, और मेरी सारी प्रोफाइल को देखे, वो कहे ये तो GI कर नहीं रही, व्हाई इज शी, बिकॉज आई वाज पुटिंग माई सेल्फ आउट देयर, एंड देन बूम, मैंने रूमेटोलॉजी रोटेशन किया, आई वाज लाइक दिस इज इट, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। तो डोंट जस्ट बी, लोग क्या करते हैं, दे लुक एट देयर मेंटोर एंड दे आर लाइक ये कर रहे हैं, मुझे भी यही करना है, इट्स अ इजी वे इन, डोंट डू दैट, ठीक है। यू माइट बी सरप्राइज्ड और यू डोंट लाइक इट, एंड इट्स अ कमिटमेंट यू मेक फॉर योर लाइफ। सो पहले ढूंढो कि क्या पसंद है, एंड देन फोकस टारगेटेड उस पे मेहनत करनी है। मेरी तरह नहीं करना कि मतलब दोनों में टांग अड़ाई हुई है। एंड देन when I was interviewing for rheumatology, they were like, are you confused or are you applying in rheumatology as a backup because this looks very shady, मतलब इस तरह से की गलती नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद okay, so now you're here in the US, right? What do you need to do? अब देखो, सारे IMGs फेलोशिप्स करते हैं, that's it। कोई मेडिसिन नहीं करता, बहुत कम होता है जिनको ट्रू एकेडमिक सेंस होती है, इंटरेस्ट होता है, वो रहते हैं। जनरली लोग स्टीयर करते हैं टुवर्ड्स स्पेशलिटी, ठीक है। द डे यू स्टार्ट योर इंटर्न ईयर, बिकॉज हम सबको थोड़ा सा ब्राउन सिंड्रोम होता है, हमें करनी सिर्फ GI और कार्ड्स होती है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने इंटर्न ईयर से अपनी फेलोशिप के लिए प्लानिंग करनी होती है। उसका सबसे शॉर्ट एंड स्वीट शॉर्टकट क्या है, फेलोज के साथ अपनी बना के रखो। जब मैं एज अ फेलो बता रही हूँ कि जब लोग आपकी इंटरव्यूज होते हैं रेजिडेंट्स के, तो आपकी जो स्टाफ होता है वो आपको बिठाते हैं और वो आपसे कहते हैं कि देखो ये हमारे पास लोग हैं, डू यू हैव समवन दैट यू रिकमेंड, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग जो, अगर आप एक प्रोग्राम में हो, आपकी फेलोज के साथ बना के रखो, उनसे पूछो कि मैंने किस अटेंडी को कैसे अप्रोच करना है, क्या रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग है। अगर इफ द फेलोज लाइक यू विल मैच, इफ द फेलोज डोंट लाइक यू, इफ यू डोंट हैव देयर ब्लेसिंग, you're not going to match, at least in that program, for your fellowship, so that's important। एंड देन रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस पे आप जाओ जरूर, ठीक है। डू अ पोस्टर प्रेजेंट कर दो। मैंने पर्सनली कुछ टॉक्स भी दी थी, लेकिन आई थिंक जस्ट बीइंग देयर एंड हैविंग इट ऑन योर CV इज गुड इनफ, एटलीस्ट फॉर मेडिकल स्पेशलिटी। सो मेक श्योर कि जिस स्पेशलिटी में जाना है उसकी सबसे एस्टीम्ड जो कॉन्फ्रेंस US में है, यू हैव टू बी देयर इन योर हियर टूर वन ऑफ योर रेजिडेंसी, ठीक है। एंड देन another thing, जब आप ऑब्जर्वरशिप्स के लिए US में आते हो, तो 2 things that you need to do before you leave: send a respectful email to the coordinator requesting to meet up with the program director, ठीक है। तो जिस फॉर एग्जांपल फॉर मी, मुझे मेडिसिन में ऑब्जर्वरशिप से मिली थी, तो मैंने पल्मोनोलॉजी में की थी, नेफ्रोलॉजी में की थी, विद इन द सेम प्रोग्राम। तो अब बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इन द सिस्टम, राइट, सो आई सेंड एन ईमेल टू द मेडिसिन कोऑर्डिनेटर एंड आई वॉज लाइक, हे कैन यू अरेंज अ मीटअप विद द PD फॉर मी फॉर द इंटरनल मेडिसिन। और उससे मुझे कोई 10 मिनट्स का स्लॉट दिया था, ऑब्वियसली दे आर बिजी टू। तो आई केम एंड आई वाज लाइक, listen here, this is my CV, I've already rotated here, you will have LORs from the people in this program for me, recommending me, right? I want you to tell me what do I need to do, how do I get here, ठीक है। and this was a good academic program too, और I know हम मतलब no disrespect, काफी लोग पाकिस्तान से मैच होते हैं, majority of them match in community programs, ठीक है। your eyes should be on the prize, ठीक है। you need to go to a university program, ठीक है। why? because
It's so much better, honestly. मतलब आपका आगे भी आपके long term आपके career के लिए it's good, and then you can always stay out into the community afterwards. But you wanna ideally match into a good academic university program. और नंबर 2 कि अगर आप पाकिस्तान से लोगों को बाद में हेल्प करना चाह रहे हो ना कि वो लोग भी इधर आएं, यू कैन ओनली डू दैट इफ यू आर इन यूनिवर्सिटी एकेडमिक प्रोग्राम, ठीक है? दैट्स व्हाट यू वांट टू डू. तो उसके लिए जो है जब आप पीडी से आपने बात कर ली है, वो आपको बता देंगे. इन माय केसेस मुझे कहा था भाई देखो स्टेप 3 नहीं दोगे, मैंने तो इधर नहीं लेना तुम्हें, उससे साफ कह दिया था, ठीक है? एंड आई लिटरली विद इन 2 वीक्स आई प्रिपेयर्ड फॉर स्टेप 3. मेरा रिजल्ट है, मैंने उसको भेजा, मैंने कहा हियर आई हैव इट ऑन माय सीवी, आई हैव एवरीथिंग दैट यू नीड, ठीक है? तो यू हैव नो एक्सक्यूज टू नॉट टेक मी. तो उन्होंने फिर मुझे कर लिया मैच वहाँ पे. तो ये उनसे डायरेक्टली बात करो. हर प्रोग्राम डायरेक्टर यू बी सरप्राइज, दे हैव अ डिफरेंट थिंग दे आर लुकिंग फॉर. नंबर 2, हर ऑब्जर्वरशिप के बाद सेंड देम अ थैंक यू ईमेल. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये दे आर वेरी बाइस्ड टुवर्ड्स दैट. और लास्ट थिंग, आई एम सॉरी आई took so much time, but last thing जो मैं mention करूँगी, एक cheat code ये भी होता है कि when I entered my training, तो there are certain tracks that you can take, like research track, रूरल मेडिकल ट्रेनिंग ट्रैक, whatever. मेरा था, उसका था नाम ग्लोबल हेल्थ ट्रैक, ठीक है? सो व्हाट दे डू इज, मेरा वो लोग लेते नहीं है, बहुत कम होते हैं, पिकी होते हैं. मैं ऊपर से मैं J1 वीजा पे हूँ, उनको ट्रैवल करना होता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में एवरी ईयर, तो दे वर वेरी पिकी. बट I use my story, right? मैंने उनको पर्सनल स्टेटमेंट लिखी, मैंने कहा listen, I am coming from a third world country, right? And I served there, तो I know कि मतलब what it takes. So what ended up happening was, so in मेरे ट्रैक में briefly, every month we will meet and we will discuss कि मतलब जो exotic parasitic diseases होती हैं third world countries में, and then how to manage them, right? And then every year they would travel somewhere. So like मेरी एक external rotation first year में अफ्रीका में थी, गाना में. मेरी एक मंथ की rotation last year फिजी में थी, ठीक है? तो when you are doing that, the number of connections you build honestly is insane, ठीक है? तो you want to be part of not just the scholarly part of things during your medical training or your surgical training, but also जो चीजें साइड पे चल रही होती हैं, to build these connections, because these connections last throughout your life. आप कहीं पे जा रहे हो, या आपके लिए लेटर्स लिख रहे हैं, या आपको वाउच कर रहे हैं, कि डायरेक्टली पीडी टू पीडी कॉल कर देते हैं कि इस बंदे को लो भाई, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है? तो कीप एन आई आउट. और कोई भी स्टूडेंट एसोसिएशंस हों और कोई ट्रैक्स हों फॉर यू टू टेक, डू दैट, बिकॉज उससे आप उस सर्कल्स में एंटर हो जाते हो एंड पीपल नो यू, सो दे आर मोर रीअश्योर्ड. और ऑनेस्टली आई थिंक हम लोग जो एक चीज पे मेरे ख्याल से यूनानिमसली एग्री कर सकते हैं, वो ये है कि एज एन IMG इन लोगों को सिर्फ तसल्ली चाहिए होती है कि ये बंदे की कोई पर्सनैलिटी इश्यूज तो नहीं है, विल दे वाइब विद द रेस्ट ऑफ अस, और उनको कल्चरल शॉक में तो नहीं बैठे रहेंगे. तो उसके लिए जरूरी होता है कि ईदर समबडी वाउचेस फॉर यू एंड पुट्स इन अ वर्ड फॉर यू, ठीक है? या फिर आप से वो मिले हुए हैं, आपने वहां पे ऑब्जर्वरशिप की हुई है और उनका आपके बारे में वहम निकल गया हुआ है, ठीक है? और या फिर आप उधर ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हो, एंड देन यू कैन मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप उनसे बात कर रहे हो, उनके लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो उनका वो फियर निकल जाता है आपके बारे में, ठीक है? तो दैट इज एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई लर्नड ओवर माय मतलब limited time here, but I will have Ahmed put mine and I think Afshin's email here as well. So अगर आप लोगों को questions वगैरह हो तो you can always email us and then I can we can over talk on the phone as well अगर किसी को कोई help चाहिए हो. Thank you so much, guys. Thank you very much, Dr. Weda and Dr. Afshin. Okay. Thank you so much for sparing some time for us, Dr. Jannat. So the last thing जो मैं कहना चाह रहा था इसी सेशन के बारे में थी, और वो मैं कहूँगा, whenever you are applying for a match, you need to join the professional organization of that field. मैं उसके लिए एक एग्जांपल दूंगा कि when I was applying for the match in pathology, I was resident of forensics here. I navigated कि पैथोलॉजी की कौन कौन सी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएस में जो कि रेजिडेंट्स को मेंबरशिप देती हैं. मुझे पता चला कि ASCP अमेरिकन कॉलेज ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी, USCP यूनाइटेड स्टेट एंड कैनेडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी, नेम नेशनल एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एग्जामिनर, कैप कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजी, एंड देन पैप्स पाकिस्तानी फिजिशियंस की पैथोलॉजी एसोसिएशन इन यूनाइटेड स्टेट. I joined all of them. I even paid a $50 registration fee to one of them. Rest of them, I just sent them an email. Okay, I cannot afford it. I have this pay for month and I pay this part in my rent, this part in this. And they literally waived off my application fee, but I became member of those society. How these societies benefited me?
इनके mentorship sections होते हैं जहाँ पे you can actually request the mentors from that society. They do help you. I received rush interview from that mentor that I got from the ASCP mentorship program. Not only that, when I was being interviewed in one of the program, an attending told me, Faraz, you are the member of more professional societies than I am. Why you are so much passionate about the pathology? So these things are actually used to gauge your interest into the field. Every international medical graduate have a similar kind of application. They put 4 clinical US rotations, 1 house job, 2 or 3 volunteer experience, and that's it, and some research experience. But all those CVs look similar. What differentiate is your presentation into United States based medical conferences, your abstract presentation, your attendance in those conferences, and your membership of those professional societies. They literally, like if the program is comparing application, on first 6 bullet points 4 applications are same, and then they go towards the 7th or 8th application and they see how much this guy is interested into our field. He's not applying us as a backup. If you are applying into family medicine, join Family Medicine Association, join Internal Medicine Association, join Pathology Association. This will highlight in your CV and this will be taken as very positive response. And this is the last thing about this session. Thank you so much. Oh, no, wait, I wanted to add a thing after that, if there's a second. So yeah, I agree with her. And if you reach out to associations and you feel like you can afford it, you can absolutely write to them an email with, like, a preface it that, I can afford it. They usually offer free memberships. Another thing is that whichever association that you work with, most likely they have international chapters. So essentially, with women in thoracic surgery, I'm trying to bring together all the women in thoracic surgery all over the world. So from China, from our country, so even you don't have to be in the US to be able to have, your mentors through association work. So I would say 100% that's an opportunity. And then you get to know more people. And obviously you can think it will open doors, but here's the thing, you knock on like 100 doors and one door opens. So who knows, maybe one of those people that you work with association work, they have an opportunity, or they know somebody who has like a position open, and you can rotate, or you can do research, or anything. So that's one thing I wanted to say. The second thing is, I feel like I dissent on humility. I think we grow in a culture where we have a lot of humility, and I speak specifically for the surgical spaces. If you're in surgical spaces and you're a woman and you're a woman of color and you're international, I think humility will be taken against you. So self-advocate, vibe out the culture of the place. Like, if it's, of course, if you go with the spine of a cardiac surgeon, and like psychiatry, not gonna work, you're not gonna gel in. But if you go with the humility of psych to the spine of cardiac surgeon, it's not gonna work either. So be very emotionally intelligent of the space and the room that you're in. And by that I mean a Zoom call room, or an in-person room, or an email that you send, and then go from there. So humility is not generalizable. That was my second point. And the third thing is that we truly, we all have been in the same place as the people who are I assume that the majority of people who are attending this seminar and this section are currently in Pakistan, and want to expand their career and have academic excellence and do things. We have all been through those situations. It is a very stepid approach. It will start with an email. It will start with association work. It will start with your dedication, and you will knock on a lot of doors. Every time you hear no, do not back down. Like, the only people, I think somebody else here was saying this earlier, the only people who do not make it are the ones who quit. I truly think there are like a gazillion opportunities in the world. So keep going. That's my message to everyone. If there's anything I can do for you, of course, I can't get you like in a resident. I'm not a resident. But if there's anything I can do to support you in your research, if you want a position here, how to sort of like
help you with building your CV, writing a cover letter, anything like that, I'm more than happy to do that. I do take like a really long time to respond. So if this is something urgent, I may not be the best person, but if you can wait like 14 to 21 days, like 2 to 3 weeks, then I absolutely try to respond to everybody. All right, great work. Thank you, everyone. Also wanted to thank, I don't know if they're there, but I truly think that our teachers raise us. And in that sense, I'm super, super grateful to Dr. Farooq Afzal, Dr. Yasin Nabi, Dr. Muniza, Dr. Muin, the people who raised us when we were at Amiruddin Medical College. And I think that truly is your, home base, no matter where you go. With that, I leave it for the next session. Take care. Thank you so much, Afshin, for joining us today.